So welcome to the second part of harassment. Okay, in first part we have studied what is harassment, types of harassment. Okay, and now we are going to study harassment in workplace. Okay, harassment is unwanted behavior, offensive behavior, insulting behavior, but intentionally. Okay, intentionally, repetitive process, repetitive behavior. Okay, always remember harassment is intentionally. People intentionally do it. So always when you have to find whether he's harassing me or it is harassment, then you have to find out very carefully because sometimes we misunderstand people. So harassment means intentionally that person is insulting you intentionally. Okay, I repeat intentionally. Okay, then intentionally without your mistake. Okay, when your senior correct you in order to have improvement in your work, then it is good, it is good for you, but without any mistake or without anything. If your co-worker is intentionally insulting you or cracking offensive jokes repeated on a regular basis, yes, it is harassment. So carefully identify whether it is harassment or whether it is just a feedback. Okay, don't confuse yourself. Okay, because it is very serious and sensitive topic. So carefully understand, carefully study what is harassment. Okay, carefully understand the meaning of harassment. So please remember, when someone intentionally insulting you, cracking offensive joke on you, okay, on a regular basis, when it create emotional and physical pain, and when it destroy or damage your self-respect, that the process is the process of harassment. Always remember. Now we are going to study the harassment in workplace. Very important topic, harassment in workplace. So workplace where you work, क्या होता है harassment in workplace? जो harassment का process होता है जो workplace पे किया जाता है उसे कहा जाता है harassment in workplace in a simple term. Okay, now we should discuss some important point. A colleague make unwelcome comments about your region. Your manager purposely make you uncomfortable. Sometime क्या होता है, हमारे जो co-worker है अनवांटेड कमेंट्स पास ऑन किए इंटेंशनली करते हैं रीजन पे. ओके, सो इट इम्पैक्ट, ओके, इट क्रिएट टेंशन. इंटेंशनली हमारा मैनेजर हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं. Sometimes, in some cases, that also contribute to harassment in workplace. Harassment is a form of discrimination, inequality, which happens when an employer treat an employee unfairly. Okay, जब भी हमारे सीनियर, ओके, या हमारे एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को अनफेयरली या इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करते हैं. बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड नेशनल ओरिजिन. ये भी हरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी हरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता है कभी कभी. ओके, समटाइम्स इन सम केसेस. Sexual harassment in workplace include for sexual favor in exchange of benefit. Okay, offensive comments about someone's sex. Sexual harassment create unhealthy work environment and it result in an adverse employment decision, like the person is demoted or denied promotion or suspended or fired. Okay, so when someone asks for sexual favor and the other person is not ready, so in some cases that person has to
person has to resign from his position, or the person is terminated because he's not giving permission or he is not fulfilling other person request for sexual favor. So it create unhealthy work environment. Now, intentionally leaving someone out of work activity or social event. Okay, हरेसमेंट कैसे, हरेसमेंट का ये भी एक प्रोसेस है कि इंटेंशनली एम्प्लॉय को, ओके, स्पेसिफिक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन नहीं कर, उसका पार्टिसिपेशन नहीं करने देना, या उसे वर्क एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देना, या सोशल इवेंट से दूर रखना। ओके, तो इससे क्या क्रिएट होता है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट। ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन या वर्क सेटिस्फेक्शन उसका कम होता है। स्प्रेडिंग ह्यूमर्स, यस, हरासमेंट इंटेंशनली फेक न्यूज या र्यूमर्स उस एम्प्लॉय के बारे में स्प्रेड करना, उसका उसको डिफेम करना, ये भी, it is also one type of harassment. Making someone feel unsafe or threatened. In workplace, healthy environment is important, but when someone intentionally feel unsafe or threatened, that is also one of the form of harassment in the workplace. Unfair treatment means discriminatory treatment, offensive or threatening to spoken or written communication. Okay, intentionally on a regular basis, if someone or your co-worker or your employer, okay, or senior authority is making offensive comment or threatening you to spoken or written communication, then it is a form of harassment in the workplace. Now, as of now, we have studied what is harassment, types of harassment, then harassment in workplace. So everyone should address it properly, carefully. Okay, now, as I say, it is very serious and sensitive topic. Okay, so now we are going to study or discuss the impact of harassment. What are the impact of harassment actually? How harassment spoil your life? Okay, first, it contribute to experience decline in self-worth and confidence in victim. क्या होता है? One of the major impact of harassment means आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या आप सेल्फ वर्थ है, ओके, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है खुद के बारे में, वो कम होता है एक्चुअली। ओके, यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। जब एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, या उसे लगता है कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, और आई एम नॉट केपेबल टू इंटरेक्ट इन अ ग्रुप, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ही इज मूविंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। ओके, सो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हरासमेंट का होता है। फर्स्ट, harassment triggers stress and it contribute to mental condition as anxiety and depression. Okay, stress बढ़ता है harassment से, when we can't solve, okay, then it create tension, it create emotional disbalance, stress automatically बढ़ता है। Harassment lead to social withdrawal and isolation which can make a person difficult to trust other. Okay, जब भी harassment होता है तो जो ट्रस्ट इशू होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वी कांट ट्रस्ट पीपल। और सोशल विड्रॉल मीन्स एक्चुअली वी डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल। ओके, विक्टिम में एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ नेगेटिव इमोशन इंक्लूडिंग फियर, एंगर एंड शेम। ओके, जब भी हरासमेंट किया जाता है तो फियर होता है या गुस्सा आता है, बिकॉज वी फील स्ट्रेस, वी कैन, एंड एंगर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस, so and shame also, because such type of negative emotion take place. Harassment can lead to disconnection and loneliness. Yes, isolate होता है इंसान,
उसे कम्युनिकेशन करना अच्छा नहीं लगता है, उसका ट्रस्ट इशू होता है, दैट्स वाई वो डिस्कनेक्ट होता है सोसाइटी से और अकेला रहना पसंद करता है। इन वर्क प्लेस हरासमेंट कैन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस यस, एक्चुअली जब आप एक एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी कम होता है। एक्चुअली इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एम्प्लॉय। Employees who experience harassment may seek alternative employment, resulting in higher turnover rate. Okay, higher turnover rates means number of employee resigning from a organization. So that term is called turnover. Employee turnover means employee resigning from that organization. So when in workplace there is harassment, it create tension, it decrease work productivity of that employee. So work employee search for new job or alternative, and that's why he resigned from that organization, and it create higher turnover. Employee turnover means employee resigning from that organization, and the reason is harassment. Increase in higher turnover rate can damage reputation and loss of public trust. Yes, जब भी एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो डैमेज होता है, बिकॉज क्यों ऑर्गेनाइजेशन रिटेन नहीं कर पाती है ऐसे एम्प्लॉयज को, बिकॉज एम्प्लॉयज फील unsafe and threatened due to unhealthy environment created by harassment. That's why he resigned from that position, from that organization. Okay, and that indirectly create or destroy the reputation of that organization, और पब्लिक का ट्रस्ट भी कम होता है. Increase in higher turnover rates can result in financial losses. Yes, indirectly उनका जो financial loss होता है, because अच्छे अच्छे एम्प्लॉय जब रिजाइन करके जाते हैं तो वर्क प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट गिरता है. वर्क प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट गिरेगा तो एक्चुअली उनका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ इनकम, वो भी कम होता है. नाउ how to handle harassment. Okay, as of now we have studied what is harassment, types of harassment, harassment in workplace, and impact of harassment. Okay, so now we are going to study how to handle harassment. The right way to do it is to tell the harasser their behavior is unwelcome and ask them to stop. Yes, it is very important. जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ इंटेंशनली कोई भी आपको ऑफेंसिव कमेंट पास करता है या जोक क्रैक करता है इंटेंशनली रेगुलर बेसिस पे, ओके, आपका इंसल्ट करता है, आपका इंटेंशनली आपको क्रिटिसाइज करता है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करता है, यस, you have to take stand for yourself. Okay, one of the most important way or one of the most important action you can take is ask that person to stop this. It is one of the most important way. Ask directly. You have to take stand for yourself. No one is going to take stand for yourself. So remember always, when such type of harassment took place, you have you only have to take a stand. No one is going to take a stand for you. So self-awareness, self-responsibility is very important. So ask that person to stop such behavior, because and give the reason that this behavior is creating a physical pain and emotional pain. Okay, if the behavior continues you should take legal action. अगर उसने सुना नहीं तो आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा. Okay, for your own benefit, because if he is not going to stop you have to take action against that person. In workplace you can report to authority or human resource department. Okay,
वर्क प्लेस में अगर आप 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 क्या कर सकते हो इन वर्क प्लेस? आप रिपोर्ट कर सकते हो अथॉरिटी को, और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, ओके, जो इस टाइप ऑफ इश्यूज से डील करता है, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस में या अपने पर्सनल लाइफ में, अवेयरनेस एंड एजुकेशन हरासमेंट के बारे में, बिकॉज normally we don't take a stand, okay, we take it, sometimes we take it as granted, but it create or it can spoil your life. Prevention include policy against harassment and training. Okay, training is very important in personal life also and in professional life, and strict action or strict policies should be there in organization against harassment. Now conclusion. Okay, as harassment create hostile environment and in any form is a serious issue with negative impact on individual and workplace. Okay, harassment क्या क्रिएट करता है? अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट गिरता है पर्सनल लाइफ पे और प्रोफेशनल लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। ओके, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि उसने हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और हरासमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ऐसी पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। टू स्टॉप हरासमेंट वी रिक्वायर ग्रोथ माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन। ग्रोथ माइंडसेट, हरास क्यों किया जाता है इंटेंशनली? बिकॉज वी डोंट हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट। थिंकिंग, उसके जो थॉट्स होते हैं या थिंकिंग होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसलिए दैट पर्सन हरास। सो इट रिक्वायर ट्रेनिंग, इट रिक्वायर strict rules and regulation. So it was all about harassment, but actually it is very serious and sensitive topic, and it requires self responsibility. You have to take action, you have to take action, you have to report. Any organization have to create policies and strict action and implement it on a consistent basis. Training is very important and self awareness is very important. So education and training of such topic like harassment is very important. Okay, so it was all about harassment. So hope you understand it and take a stand for yourself. Okay, take a stand, it's your responsibility. So thank you very much, take care, and best of luck for your future.